Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to EVS class. Today we are going to learn special houses. In the previous session we have seen the kacha house and type of pakka house. Now special houses. Some people live in special types of houses. Let us learn about some these houses. Igloo. You have heard this name, igloo. Igloo are dome-shaped house found in very cold places. They are made of ice and snow but remain warm from inside. Eskimos live in igloos. Okay, this is known as igloos. It is made up of ice and snow. ओके बट ये अंदर से वार्म रहता है, गर्म रहता है, और इसमें जो रहते हैं उनको एस्किमोस बोलते हैं. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप इज कारवा. द कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स. इट हैज ऑल द कंफर्ट्स ऑफ अ हाउस इनसाइड इट. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. In earlier times, कारवा were pulled by horses or camels, but nowadays there are कारवास attached to cars. So, कारवा किसको बोलते हैं? जो व्हील्स पे रहता है, जो व्हील्स पे घर होते हैं. ओके, एवरीथिंग इनसाइड द लॉन्ग बसेस, a type of buses attached to the cars. But in अर्लियर टाइम, पहले जब गाड़ियां नहीं थी, जब इसको हॉर्सेस और कैमल्स पुल करते थे. नाउ अनदर टाइप दैट इज स्टिल्ट हाउसेस. द वुडन हाउसेस दैट आर मेड हाई अबव द ग्राउंड आर रेफर्ड एज स्टिल्ट हाउसेस. दे स्टैंड ऑन स्ट्रॉन्ग bamboo. Pillars are called stilt. This is done so that the rain water and insects that come out during the rainy season do not enter the houses. Okay, stilt houses डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं होते हैं. एक्सम स्टैंड बाम्बू से उसको थोड़ा ऊपर होते हैं. बिकॉज वाई? क्योंकि रेन वाटर और इंसेक्ट्स जो है वो नीचे आते हैं इन द रेनी सीजन. दिस इज नोन एज द स्टिल्ट हाउस. You can see in the picture. Now the another type is tent. A temporary house made up of a thick cloth canvas is known as a tent. It is mostly used in desert areas. Tents are also used while camping as they are easy to put up and carry. Now, houseboat. It is a boat with a number of rooms in it. It has all the features of a house. In India, the states of Kashmir and Kerala are famous for houseboat. Now, houseboat. Houseboat में जो बोट होती है उसी में घर बना हुआ रहता है. Everything which you have in your house, you can see there many rooms and everything, all luxurious things in the boat only. So that is known as houseboat. You can see in the state of Kashmir and Kerala. Now practice zone 2. Identify the picture of the houses and write their name in the space given. So this is your homework. You can see the picture and easily find out which type of houses are these. The space is given to you, write in that. Now, an ideal house. An ideal house. Ideal means perfect or most suitable. A house must have some basic things to make it an ideal house. Ventilation. An ideal house has enough windows and doors that provide good ventilation. Good ventilation gives fresh air
and sunlight. It also kills germs and saves electricity. So ventilation means what? हवा का आना जाना. Okay. And sunlight. Then sanitation. Sanitation means having a system of drainage that carry the dirty water and waste out of the houses through pipe. Thus we will be able to prevent illness. So in the basic houses, basic things, that ventilation, sanitation, this should be there. Then disposal of garbage. Garbage should be disposed or thrown in a closed bin. It should then be collected by the local garbage collector who dumps all the garbage at a proper place. It prevent diseases. तो जो भी डस्टबिन यूज करते हैं वो where डस्टबिन शुड बी क्लोज्ड. जो बंद वाले ढक्कन वाले डस्टबिन होते हैं, दैट वन वी हैव टू यूज. And the local garbage collector who dumps all the garbage at a proper place. So उससे क्या होगा? Diseases नहीं होंगे. It prevent the diseases. Then cleanliness. Dusting, sweeping and mopping should be done regularly to keep the house clean. A dirty house has germs that cause diseases. तो dusting, झटकना, झाड़ना, पोछा मारना, it should be done regularly. That उस पे जर्म्स और डिसीज, जर्म्स नहीं आएंगे तो डिसीज भी नहीं होंगे. तो यू शुड कीप योर हाउस क्लीन. देन सेफ्टी. नेट्स ऑन डोर प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम कमिंग इनसाइड द हाउस. देयर शुड बी नो लूज इलेक्ट्रिकल वायर्स इन अ हाउस. इट मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स. फर्नीचर विथ शार्प एजेस मस्ट बी अवॉइडेड to protect accident. So these all safety measures should be done in your house. Okay. जो इलेक्ट्रिक चीजें वो ऐसे ही वायर लूज नहीं, नीचे नहीं छोड़ना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली डन. सो एक्सीडेंट्स जो इट कैन बी प्रिवेंट बाय द एक्सीडेंट्स. ओके. फर्नीचर जो है उसके शार्प एजेस, कॉर्नर्स जो है उसके शार्प नहीं होना चाहिए. सो यू कैन सी हियर प्रैक्टिस जोन 3. राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द रॉन्ग वंस. एन आइडियल हाउस शुड हैव proper ventilation. So this is the true. There should be loose electrical wire in a house. घर में लूज इलेक्ट्रिकल वायर्स होना चाहिए क्या? नो. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. A proper sanitation system prevents illness. That is true. Garbage should be thrown anywhere openly. This is a false one. So hope you have understood. Complete. You can pause and complete. Thank you.